और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक पुलवामा हमले के बाद से कश्मीर घाटी में 18 आतंकियों को ढेर कर दिया है हमारी फौज ने और सुरक्षा बलों ने। आज सुबह ही त्राल में जो एनकाउंटर चल रहा था सुरक्षा बलों के साथ, उसमें जैश के 3 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें 2 आतंकी वो हैं जो पुलवामा हमले में शामिल थे। एक सज्जाद भट्ट, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल पुलवामा हमले को अंजाम देने के लिए किया गया था, और दूसरा मुदस्सिर, जिसने के बाकी इंतजाम किए थे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मुदस्सिर, यही है एक आतंकी जो आज मारा गया, और ये सज्जाद भट्ट, जिसकी मारुति इको गाड़ी का इस्तेमाल पुलवामा हमले के लिए किया गया था। मुदस्सिर ने बाकी इंतजाम किए थे। आइए सुनते हैं। The main conspirators, that is Kamran and Mudassir, who are the main heads of JEM, they have been eliminated, and we had gone very, very forcefully behind Jaish-e-Mohammed in the last 3 weeks. Aim was to eliminate them at the earliest, so that they are not able to carry out any Pulwama-like attack again. So we have reasonably succeeded in that. Like I told you, in 21 days, we have eliminated 18 terrorists, and 14 of them from Jaish-e-Mohammed, and 6 of them in Alpha Plus category. So that is the main focus of the security forces over the last 3 weeks, wherein we have gone behind Jaish-e-Mohammed and try to eliminate their top hierarchy, so that Pulwama type of incident is not repeated. Now that is first. And second part of the question was? Okay, again, it's not that we have stopped looking at Lashkar and Hizbul Mujahideen. As I told you earlier, we have killed 2 of Lashkar and 2 of HM terrorists in these 3 weeks, and they are very much on our radar. And only thing is, we lay more focus on the Jaish-e-Mohammed for the obvious reason, so that they are not able to repeat an incident like that. Notwithstanding that, Lashkar and HM and other tanzeems operating in the valley, they are very much on our radar, and the actions are being taken against them. जी साहब, मेरा नाम रिफत है और मैं नेटवर्क 18 से हूँ, और मेरा सवाल ये है कि लास्ट विलेज जो उगली साइड में एक है सिलीकोट में 2 साइड से फेंसिंग है, यानी कि जब उनको एंटर होना पड़ता है अपने विलेज में, वहां पे भी फेंसिंग और बैक साइड से भी फेंसिंग। वहां के लोग काफी टाइम से मुतालबा कर रहे हैं कि वो फेंसिंग जो है रिमूव की जाए और उन्हें अपने विलेज में आसानी से आने जाने की इजाजत दी जाए। आर्मी को ही इजाजत देनी पड़ रही है आने की भी और जाने की भी काफी टाइम से, लेकिन आज तक कोई ये फैसला नहीं ले पा रहा है। इस तरह के कुछ और भी विलेजेस हैं जो ये कह सकते हैं कि रात को वो आर्मी के प्रिजन में होते हैं, तो क्या उनको प्रिजनर शिप से बाहर लाया जाएगा? क्या आपकी तरफ से कोई ऐसे जो है कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वहां के लोग काफी सारे लोग हैं, एक्स सर्विसमैन भी। First of all, I take offense to your words of prisoners of army. There's nothing like that. Please. Okay. Notwithstanding that, जो villages फेंस के आगे हैं, क्योंकि फेंस एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम है, और उस एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम को हर वक्त टाइट रखना और उसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उन विलेजेस को आर्मी उन विलेजेस के हमसाया है, वहां पे हम लोग, we live with them. You go for 1 day and you file a report. We live with them 24/7 for 365 days. They are like our families there, and we allow them at the time of their choosing as to when they want to come out. And there are instances at 2 in the night we have taken out the pregnant ladies carrying the cot on the shoulders of the Jawans. We care so much for our citizens in that area. So I think that sums it all. आपसे यही आप उड़ी की बात चल रही है, जो पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार सीज़फायर वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई है, तो पहली बार देखा गया है कि कश्मीर में भी जो है वहां पर भी ये हो रही थी उड़ी के सेक्टर पर। तो लेटेस्ट स्टेटस जो है बिटवीन ऑन द सीज़फायर वायलेशन फ्रंट, व्हाट इज द स्टेटस इन द कश्मीर वैली ऑन द लाइन ऑफ फ्रंट? कहां पर कोशिश हुई और कहां पर आपने जवाब दिया है पाकिस्तानी फायरिंग? ऑफ लेट, जैसे कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले भी उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की थी, और कुछ हमारी सिविलियन कैजुअलिटी कमलकोट विलेज में हुई थी। परसों रात को भी फिर पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, फिर कमलकोट विलेज में 5 सिविलियन कैजुअलिटी हुई हैं, और उन सिविलियन कैजुअलिटीज को फर्स्ट एड भी आर्मी ने दिया है, उनको वैक्यूएट भी आर्मी ने किया है, और उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो सिविलियन कैजुअलिटी पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्योंकि आर्मी को हिट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए सिविलियन विलेजेस जो गांव बॉर्डर के साथ एलसी के साथ साथ है उनको हिट कर रहा है। एंड खास करके कमलकोट इन द लास्ट 2 काउंटर सीजफायर वायलेशन हैज कम अंडर ट्रेमेंडस फायरिंग फ्रॉम पाकिस्तानी साइड, and civilian casualties have happened because of Pakistani firing, which is unprovoked.
Notwithstanding that, Indian Army has given a befitting reply, and we have hit their military targets from the where these weapons are firing in the counter to their ceasefire violations. मैं मंजूर मीर इंडिया टीवी से मेरा सवाल है कि रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ क्या उसके बाद पीओके या पाकिस्तान में मिलिटेंटों की मदद में कोई कमी आई है या सिर्फ पाकिस्तान दिखावा के लिए ये सब कुछ कर रहा है? I think इसके ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड द नेशनल लीडर्स हैव मेड लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड आई थिंक वी शुड गो बाय दैट एंड आई वुड बी हैप्पी इफ यू टॉक टू मी अबाउट 15 कोर एंड कश्मीर वैली. My question is that how many people are presently in Jash in Kashmir Valley, and second is that have you realized in your last two encounters that there has been a lot of casualty of security forces in these two encounters? Have you realized that these guys are much more battle-hardened than the people who are locally, who are, for example, the Kashmiri militants than the Pakistani militants? Because we saw in Hanwara that the encounter lasted for a long thing. And I have a request. Sir, I'm sorry, you said that it's a propaganda, but I think you should send somebody to the national highway and see how people are being harassed in the vehicle. This has nothing to do with the person, but just someone I personally felt it. Okay, the last part of the question first. I don't have to send anyone. I got the whole of my army on the roads doing the ROP. And you all know it. You know it from the heart of heart. You're smiling also. That you don't have to wait for more than a minute, minute and a half to 2 minutes. That sums up the third part. First, and coming back to the how many numbers in the valley, I think IGP Saab has already said this. These are operational details. We would not like to divulge it, but notwithstanding, suffices to say, in the last 3 months or so, the local recruitment has come down, and that's a good sign. And coming down to the another part of the question was the terrorist and our own casualties. I would like to take some time on this. Ladies and gentlemen, what happens is when the encounter starts, it's invariably in the last few encounters, it's in the built-up areas where a lot of civilians are there, where a lot of property is there. We take time and we make efforts to, first of all, evacuate all the civilians. We don't want a hostage situation. We don't want a situation where civilians are injured or suffer a loss of life or property in the crossfire. As a result, we take more precautions and we take more risks to evacuate the civilians before we actually go in for an actual firefight. And in that case, when we are trying to evacuate the innocent civilians, there are chances, if you see all the operations where the casualties have happened to us, it happened in the initial stages. Initial stages, because we are trying to take out the civilians, we are exposing ourselves, if I can use that word. And that is basically because we don't want the innocent civilians to get hurt, injured or killed in this type of an operation. So that is why the casualties which happened on our side happened because of that, but that will not deter us. We will continue to carry out our operations with surgical precision and giving all possible help and assistance and protection to the civilians. Sir, would you be at least able to say that whether